In a turnaround from his earlier stand, social activist Anna Hazare has issued a warning to the government and said that he will campaign against the Congress in 5 poll-bound states if the Lokpal bill is not passed in the winter session. The tone had already been set earlier yesterday. उसके लिए अनशन करेंगे। मैं ये तय किया, शुरू में अनशन करेंगे 3 दिन तक, उसके बाद मेरा टूर शुरू हो जाएगा जब ये 5 राज्यों का इलेक्शन आएगा। उस टाइम एक तो 3 दिन का अनशन होगा निषेध के लिए, उसके बाद देश में कई हिस्सों में मेरे सभा हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन के पहले हर राज्यों में 1 दिन का धरना और उसके बाद प्रचार सभा 5 राज्यों में करूंगा। But by the time the Marathon Parliamentary Standing Committee meeting ended late last night, there seemed to be a breakthrough of sorts, at least initially. We have come full circle as far as witnesses are concerned. We've had a marathon close to 7 hours plus session over 2 days with all the members of Team Anna. We are extremely happy with the direction, the momentum and the pace of these proceedings, which would certainly not be possible but for the exemplary cooperation of each member of this committee. But the differences in perception were quite evident. उसमें कई बातें अच्छी बातें हुई जो जिससे हमें भी थोड़ा समाधान मिला है, लेकिन पूरा समाधान नहीं, कुछ हद तक समाधान मिला है। ऐसे अलग से बिल बनाना अभी जरूरत नहीं। जन लोकपाल बिल एक अच्छा ड्राफ्ट बन गया, अच्छा कानून बन सकता है। अलग अलग टुकड़े बनाकर और कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं। The bone of contention now, the attempt to split the Lokpal bill into separate bills, a divide that Team Anna says would make the bill ineffective. You have broken Jan Lokpal bill into several parts to make it completely ineffective. You have a Whistleblower Protection Act where you have said that CVC will provide protection to whistleblowers. CVC does not have any powers and any resources. Likewise, you said there will be a separate bill for judiciary. In that bill, you are not even talking of corruption of judiciary. Now you have a third bill for Citizens Charter. Now the Citizens Charter bill is also so highly centralized and it is again an ineffective bill. स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कई बार दोहराया है कि हम लोग एक सख्त लोकपाल बिल इस शीतकालीन सत्र में संसद से पास कराएंगे। अब उनको शांत बैठना चाहिए और शांत बैठ के शीतकालीन सत्र का इंतजार करना चाहिए। The assurances obviously weren't good enough. जन लोकपाल का टुकड़े बनाकर अलग से कानून बनाना, इसका साफ मतलब कि नियम साफ नहीं। And Anna is no stranger to the ways of the government. Bureau Report, Times Now.